टीएनसी का बदलता स्वरूप, टीएनसी बीएसआर का बदलता रंग रूप। टीएनसी बीएसआर अब है बीएसआर मीडिया ग्लोबल चैनल। नमस्कार, बीएसआर मीडिया ग्लोबल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं बीएसआर मीडिया। देखना बीच बीच न रह जाए। अभी समय सुबह 4:30 बजे लगभग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे साथ में बेहद खुशी की बात यह है कि गुरु पूर्णिमा का दिन चल रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान में तो शायद दिन खत्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर कई कंट्रीज में अभी भी गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो हम सीधा आपको ले चलते हैं टोरंटो, जहां पर बेहद खूबसूरती से स्वामी प्रेम अनमोल और कई सारे और सन्यासी मिल करके ये गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा, देर ना करते हुए स्वामी प्रेम अनमोल जी के पास टोरंटो में। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। है योगेश्वर, है परमेश्वर, है ज्ञानेश्वर, है सर्वेश्वर। है योगेश्वर, है परमेश्वर, है ज्ञानेश्वर, है सर्वेश्वर। निज कृपा बरसाओ शो, निज कृपा बरसाओ शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। सन्यासी तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ प्यारे। सन्यासी तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ
प्यारे, शीश झुकाए खड़े तेरे आगे, शीश झुकाए खड़े तेरे आगे, प्रेम सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। सच्ची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ शो, सच्ची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ शो, अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगा दो शो, चित शक्ति को जगा दो शो, आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण न शरण लगाओ शो, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण न शरण लगाओ शो, पार हमें तो लगा दो शो, पार हमें तो लगा दो शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो।
विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु बिन सूना है घर मेरा प्रभु बिन जीवन है अंधेरा ओ प्रभु बिन सूना है घर मेरा प्रभु बिन जीवन है अंधेरा जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा तू ही केवैया तू ही है किनारा तू ही जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा तू ही केवैया तू ही है किनारा तू ही किनारा। कौन है अपना कौन पराया भेद ये कैसा समझ न आया वो कौन है अपना कौन पराया भेद ये कैसा समझ न आया व्यर्थ बातों में समय गवाया मोती रेत में नजर ही न आया नजर ही न आया जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा तू ही केवैया तू ही है किनारा तू ही किनारा। टोरंटो से हम यहाँ पर हाजिर हैं आप लोगों के साथ में बीएसआर मीडिया रात को तकरीबन या यूं कहें अब सुबह 4:55 पर। मत कर तू अभिमान रे पगले तेरे जैसे लाखों आए ओ मत कर तू अभिमान रे पगले तेरे जैसे लाखों आए लाखों इस माटी में खाए रहना नाम निशान रे बंदे निशान रे बंदे जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा तू ही केवैया तू ही है किनारा तू ही किनारा।
प्रभु बिन सूना है घर मेरा, प्रभु बिन जीवन है अंधेरा। जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया तू ही है किनारा। तू ही जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया तू ही है किनारा, तू ही किनारा। जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया तू ही है किनारा। तू ही जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया तू ही है किनारा, तू ही किनारा। जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया तू ही है किनारा। तू ही जीने का सहारा तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया तू ही है किनारा, तू ही किनारा, तू ही किनारा, तू ही किनारा। Can artificial intelligence make you money in 2023? नजर मिली अपनी खबर मिली, से नजर मिली अपनी खबर मिली। हम ढूंढते कहाँ थे, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। से नजर मिली अपनी खबर मिली, से नजर मिली अपनी खबर मिली। भाई हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैं जिसको मैं ढूंढता फिरा, मैं जिसको मैं ढूंढता फिरा, गैरो हरम में जिसको, गैरो हरम में जिसको मैं ढूंढता फिरा। मौजूदगी में तेरी, मौजूदगी में तेरी उसकी डगर मिली। हम ढूंढते कहाँ थे, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। से नजर मिली अपनी खबर मिली, से नजर मिली अपनी खबर मिली।
सभी सन्यासी हम मौन में बैठ गए हैं, तो अभी हम मौन का मजा लेते हैं, ध्यान का और मौन का।
गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का क्या राज है?
तो सारी सारे अनुभव स्वामी जी अब समाप्त करते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा कि बेहद खूबसूरत जो है टोरंटो से ये बिल्कुल सीधा प्रसारण अभी थोड़ी देर में अमेरिका से भी हमारे साथ में प्रसारण शुरू होने वाला है और हम आपको तब तक ले चलते हैं बेहद खूबसूरत एक यादों की तरफ और यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे बेहद खूबसूरत हंसराज हंस जी, पद्मश्री हंसराज हंस, जो कि हमारे देश के एक जाने माने गायक भी हैं। उनकी एक बेहद खूबसूरत प्रस्तुति को हम यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। टीएनसी बदल रहा है, टीएनसी भगवान के रंग में रंग रहा है। टीएनसी लाइव अब है टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल। नमस्कार, मैं राघव टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा बेहद खास प्रोग्राम हमारे साथ में है। आज हमारे देश के जाने माने बॉलीवुड और सूफी सिंगर और साथ में पद्मश्री और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एमपी सांसद श्री हंसराज हंस जी। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा और आज हमारे साथ में आप हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो है आपके साथ में मंच शेयर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले
कि हम आज बात करने वाले हैं ओशो यानी भगवान श्री रजनीश के बारे में। तो मैं आपसे सबसे पहले जो प्रश्न है वो ये पूछूंगा कि आपका कैसे और कब जुड़ना हुआ भगवान श्री रजनीश के साथ? मैं जब पढ़ता था 9वीं 10वीं में, तो एक फोटोग्राफर थे, हमारा जलंधर ज़िला है, हम तो गांव में रहते थे लेकिन पढ़ने शहर आता था मैं ऑफ मिडिल क्लास के बाद। तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर थे, मिस्टर वशिष्ठ, वीरेंद्र वशिष्ठ, वो उनके फॉलोअर थे। जब भी हम जाते फोटो शोटो खिंचाने के लिए, तो उन्होंने एक टेप लगाई होती थी, कैसेट का ज़माना था वो, तो हम कैसेट सुनते ये किन की है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला ये उनकी है। फिर जब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समझ आने लगी, फिर रस आने लगा उनकी वाणी में, उनकी आवाज़ से लेके, वोकैबलरी से लेके, बाकी जो गहरी बातें हैं ये तो खुश नसीबों को समझ आती है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी शय उनकी अट्रैक्ट करती थी। आवाज़ ऐसे जैसे कोई लोरियां दे रहा हो। तो फिर तो मैं एडिक्टेड ही हो गया। एक कैसेट से शुरू किया था, फिर मेरा पूरा एक कमरा भर गया था कैसेटों से। एक जैसे सीरीज शुरू होती थी, कबीर पे बोले तो पूरी सीरीज मैं खरीदता था कैसेट की शक्ल में। फिर वो जब पूरी होती थी तो फिर अगली, ऐसे सुनते गए, अब तक सुनते हैं। बहुत सुंदर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो है, जिस तरह से आपने बताया कि उनकी कैसेट्स वगैरह आप खरीदा करते थे और उनकी जो वोकैबुलरी या जो कहते हैं, तो उसको लेकर के भी आप अक्सर उनको शुरुआत से ही सुना करते थे और धीरे-धीरे आप जुड़ते चले गए गहरे उनके प्रेम में। तो आपकी उनसे मुलाकात भी हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं उनसे हुई, मेरी जी। बदकिस्मती है। इस धरती पे इतने बड़े लोग होके गुजर जाते हैं, तो हम जैसे गफलत की नींद में सोए हुए लोग बदकिस्मत उनके दीदार नहीं कर पाए। जब थोड़ी सी होश आई तो वो शरीर त्याग चुके थे, तो ऐसा ना हो पाया कि उनके मैं दर्शन कर सकूं। जी, तो क्या हम क्योंकि आपने बहुत सुंदर-सुंदर गीत गाए हैं, क्योंकि आप सूफ़ी गायक भी हैं, तो हम क्या आपसे कुछ सुन सकते हैं? वहाँ से शुरुआत कर मैं सकते हैं? 10-12 साल से गाया नहीं है कुछ भी, मैं डाइवर्ट हो गया हूँ। अब मैं गाता जी। नहीं हूँ, सुनता ही हूँ। जी, 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 जी। तो हम ये चीज़ भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जगह-जगह पर, जैसा कि हमने सुना है कि अंसल प्लाज़ा में भी आपका जाना रहता था। उनकी जो लाइब्रेरीज़ वग़ैरह जो होती थी, वहाँ पर भी आपका आना-जाना लगा रहता था। तो लोग आपसे ओशो जगत के, भगवान श्री रजनीश जी के जगत के लोग भी काफ़ी सारे आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आपका कब और कहाँ पर किस तरह से जाना होता रहता था? एक्चुअली जब मुझे शौक हो गया सुनने का, फिर उनके फॉलोअर से भी प्यार हो जाता है, तो स्वामी कीर्ति जी, मेरे लिए जो बहुत इज्जत की जगह है, वो उन्होंने बुलाया था मुझे। तो वो ओशो टाइम्स निकालते थे, शायद आपको पता हो, एक अखबार, एक मंथली पेपर होता था, तो वो भी मैं लेने जाता था। फिर मेरे से भी उन्होंने रिलीज कराया था, गुरु नानक साहब के बारे में था, पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में वो उन्होंने एक पूरा अंक छापा था, तो जालंधर में मैंने वो रिलीज किया। तो ऐसी बस सिलसिला चल रहा है। संगीत को लेकर के भगवान ने हमेशा एक ही बात कही है कि संगीत भी एक साधना है, एक ध्यान है। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? संगीत की वजह से ही ये जो जिस धरती पे हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, ना जाने कितने लोग सुन या देख रहे
हैं। ये जितनी भी रचना है ये संगीत से हुई है। आफ्टर बिग बैंग थ्योरी अब साइंस ने भी कहना शुरू कर दिया कि एक खास तरह की ध्वनि थी जिसे ओम का भी नाम हम देते हैं। सा मा, अगर सुरों की संगीत की जुबान में 2 नोट है, तो ये संगीत से ही क्रिएट हुई है। लाइट एंड साउंड का ही चक्कर है ये सारा, क्योंकि अनहद नाद ले लें, बांगे उस्मानी ले लें, वॉइस ऑफ सफीर ले लें, और जिन्होंने ये बोला द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, तो वो संगीत के जरिए, संगीत म्यूजिक इज easiest way to reach the God, like जी, म्यूजिक एक ऐसी शांति, एक ऐसा गायन सुन करके ऐसी शांति प्राप्त होती है। जब भी हम कहीं भी किसी सूफी गाने को सुनते हैं, गाने का किसी भी रूप में सुनते हैं, तो बहुत ही हृदय में शांति प्राप्त होती है। जो आपका खास तौर पे नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, क्या हम कोई कुछ 2-4 लाइनें हम सुन सकते हैं क्या? मैं गाता नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जी, जी, जी। डाइवर्ट हो गया हूँ। 10-12 जी। लाइनें, 10-12 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। जी, आप जी, जी। सोचो इंडियन पॉलिटिक्स में बंदा होके गाना गाता हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी, जी, तो जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जी। मैं गाता नहीं तो मैंने शुरू कर देना था अब तक। जी, मुझे याद है हमने पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे गाने भी सुने थे, तो हाँ, बेहद खूबसूरत आपकी आवाज़ है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसा हम देखते हैं कि आजकल का जो माहौल है, उसके अनुसार भी अगर हम बात करें, तो शायद अध्यात्म की बेहद ख़ास ज़रूरत है। और आप जिस तरह से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपकी अगर अध्यात्म की जर्नी को लेकर के बात करें, तो शायद अ, अध्यात्म से जो आपका गहरा जुड़ाव है, वो बेहद ख़ास है। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिज्म की, सच हक के रास्ते की तब से जरूरत है जब से ये दुनिया बनी है। हाँ, समय समय से युग पलटते रहे, सोच बदलती रही। जैसे आज का ज़माना है, बहुत फास्ट है, कंपटीशन का ज़माना है, ग्लोबलाइज हो गया है सारा, तो बंदा एक दूसरे को, छोटी हो गई है दुनिया, एक दूसरे को फॉलो करता है। तो हर शय होने के बावजूद स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा है, डिप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें अध्यात्मकवाद ही है, मालिक का नाम ही है, मेडिटेशन ही है जो आपको शांत रख सकता है। इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है, इसका प्रचार भी होना चाहिए। अगर जो प्रचारक अच्छा है, प्रैक्टिकल है, तो उसी का असर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओशो खुद प्रैक्टिकल थे, तो पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर बन गए। अगर झूठा बंदा जो सच्ची बात करेगा तो उसके मुंह से जचेगी नहीं। अगर ऐसा ना होता तो फिर ओशो जैसे लोग हम देखने को मिलते। तो इस वजह से कोई लोग आते हैं, कभी बुद्धा आता है, कभी ओशो आते हैं, कभी कबीर आते हैं, कभी गुरु नानक साहब आते हैं, गुरु रविदास महाराज आते हैं। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि आए थे, जिन्होंने विचित्र वीणा बनाई, दुनिया का पहला छंद और संगीत जिस खित्ते में हम रहे उन्होंने स्टार्ट किया था। ध्यान की साधना की हम बात करें अगर, क्योंकि आप बहुत गहरे ध्यान में अक्सर रहते हैं जब भी आपको मौका मिलता है। ख़ास तौर पे हम जैसे अभी आपने कहा कि वाल्मीकि भगवान ने जो है वीणा का अवतरण किया और उसके बाद में विचित्र वीणा। निरंतर
जी, विचित्र वीणा वीणा। की तरह की है, विचित्र वीणा वो है विचित्र जिसमें वीणा। वैराग है, राग जी, है, अनहद राग धुन है, जिसमें शब्द है। जी। तो मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ध्यान की साधना में, ख़ास तौर पे अगर म्यूज़िक की साधना में डूबना हो, तो क्या करना चाहिए? अगर कुछ आप हमें मार्गदर्शन दे सकें। साधना के लिए तो सारा कुछ, हर काम के लिए कुछ करना होता है, इसके लिए कुछ नहीं करना। जो एफर्टलेस हो गया, जो सारा कुछ छोड़ के यकतरफा ध्यान यकसुई हो गया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। हर काम में कुछ ना कुछ करना होता है। ये खूबसूरत काम है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सरेंडर करना है, कंप्लीट सरेंडर, कि जो भी हो रहा है वो होना ही है। जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखना भी है, सुनना भी है, और कबूल भी करना है। हम तो एकदम कह देते आज का दिन बहुत बुरा था। जिसने ये बात कही, समझो उसने अपने रब को बुरा कहा, अपने मालिक को बुरा कहा, जिसने कहा ये मेरा बुरा दिन था। किसी ने किसी दुर्वेश से, फकीर से पूछा था कि खुशकिस्मत कौन होता है? कहता जो अपनी किस्मत पे खुश हो, वो खुशकिस्मत है। जो उसने लिख दिया, जैसे वो रखता है, उसी हाल में राजी रहना, ये खुशनसीबी है। जैसा भी आपने कहा कि आप अभी 10-12 साल से तकरीबन राजनीति में हैं, तो भगवान श्री रजनीश ने यानी कि ओशो ने राजनीति को लेकर के भी बहुत कहा है। पिछले दिनों ही अभी हमारे योगी जी ने भी पूरी विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि जो समाजवाद को लेकर के उनका जो दर्शन था वो बिल्कुल सही था, जिस तरह से भगवान श्री रजनीश ने समाजवाद को लेके कहा है। तो उनके राजनीतिक दर्शन शास्त्र को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने राजनीति को लेकर के कहा है? ओशो एक ऐसी बहती धारा थी, एक बहरे समंदर थे। उनका ताल्लुक चश्मे शाही से था, जो खत्म नहीं होता था। उन्होंने खुद बोला था कि किसी का कनेक्शन टैंकी से होगा तो टैंकी में तो जितना पानी है आके फिर टूटी बंद हो जाएगी। जिसका ताल्लुक ही चश्मे शाही से, वो एंडलेस है। ओशो ने जिस टॉपिक पे भी बोला, लगा इससे बेहतर और नहीं कोई बोल सकता है। जो राजनीति पे बोला तो लगा कि इससे बेहतर कोई नहीं है। हालांकि वो राजनीति को जाती तौर पे लाइक नहीं करते थे, ना राजनीतिक्स को, ना पॉलिटिक्स को, ना पॉलिटिशियंस को। लेकिन उनका ये मतलब नहीं कि वो नफरत करते थे, वो एक सीख देते थे कि ऑनेस्ट बनो, इस मुल्क के तुम रहनुमा हो, इंसाफ करो, ऑनेस्ट बनो, जस्टिफाई करो। नहीं तो फिर वो कहते थे गधों की तरह ही है। मुझे अच्छा लगता है ये शब्द राजनीति में आके भी। अगर बंदा रात दिन करप्शन में फंसा हुआ है, जुल्म ही करी जा रहा है, तो फिर क्या फायदा ऐसी राजनीति? चाहे कोई वाद हो, समाजवाद हो या कोई वाद भी हो, उस जिससे विवाद होता है वो कोई भी हो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भगवान ने हमेशा राजनीति के बारे में भी उन्होंने सिर्फ जो सही रास्ता है हमेशा वो ही सिखाया है। उनके कहने का एक ही तात्पर्य था कि पूरी दुनिया में वन नेशन वन कंट्री होनी चाहिए, पूरी दुनिया एक हो, दुनिया में कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर के उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया है। तो मैं उनका आपसे मतलब उनका मतलब ये था कि भगवान इतना कंप्लीट था कि उन्होंने जो भी बनाया वो ठीक बनाया, उसको तो मानो, क्योंकि वो भगवान ने बनाया है, डिजाइन किया है, क्रिएट किया है। लेकिन जो मैन मेड चीजें थोप दी गई हैं, उनको ना मानो। जो नहीं रू करती, बागी हो जाओ। जैसे कास्टिज्म है, क्लासेस हैं, ऊंच नीच है, बॉर्डर्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, नस्ल लिंग भेद है, इसको खत्म करने के लिए मेरा ख्याल कहा था, जितना कि मुझे समझ आए। भगवान का जो मैं यूं कहूं कि अगर
उनकी जो मेडिटेशन है, आप उनके किसी मेडिटेशन से भी जुड़े हुए हैं या आप उनका कोई खास मेडिटेशन भी पसंद है? एक बार मैं पुणे गया था, तो पुलिस ने फंड रेजिंग फंक्शन करना था। तो इत्तेफाकन जो डीजीपी थे वो पंजाब के थे, जनाबे सरदार एस विर्क साहब। तो उस वक्त ऋतिक रोशन साहब इंट्रोड्यूस ही आए हुए थे, उन बहुत हिट थे वो। तो उन्होंने बोला कि एक तो ऋतिक रोशन आ जाएंगे, और अगर तू आ जाए, क्योंकि ऋतिक रोशन साहब 2-4 मिनट की एंट्री देंगे, बाकी सारा समा एक सिंगर चाहिए जो संभाल सके सारी स्टेज को। 2-3 घंटे का था, पुलिस के लिए था फंड रेज करना। तो फिर उस वक्त मैं पुणे आया, तो फिर उन्होंने रात को बोला कि और क्या देखना चाहते हो पुणे में। मैंने कहा जी मुझे ओशो कम्यून जाना है, और कोई मेरी इच्छा नहीं, ख्वाहिश नहीं। फिर मैं वहाँ गया था। वहाँ माँ आनंद जी और एक लुधियाना के भाई साहब थे, वो भी मिले। आपको पता वहाँ एड्स का टेस्ट होता है जाने से पहले, बाहर पता नहीं क्या फैलाई हुई लोगों ने, लेकिन वो टेस्ट करके अंदर उन्होंने भेजा। तो जो मैंने देखा, जैसा तस्वीरों में फिल्मों में देखा था, उससे बहुत अद्भुत एक मस्तों की, पियक्कड़ों की, मलंगों की दुनिया देखी। फिर बाद में अगले साल मुझे उनके जन्मदिन पे बुलाया गया मैनेजमेंट की ओर से। फिर मैंने वहाँ परफॉर्म भी किया था, और 1-2 दिन ओशो कम्यून में भी रहा। जहाँ तक मेडिटेशन का ताल्लुक है, मैं बाकायदा तौर पे ना मैं इनिशिएट हुआ, ना मैं मेडिटेशन का कोई शिविर अटेंड अभी तक किया। बस मेरा मेडिटेशन वही था जो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के रियाज करता था। ये मेरी रूटीन थी, जो मेरी प्रैक्टिस थी। उस वो भी एक मेडिटेशन है जो हम स्वर अभ्यास करते हैं सुबह। भगवान ने हमेशा ही कहा है कि जो हमारा वर्क है वो भी एक मेडिटेशन है। अगर हम अपने कार्य में डूब जाते हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है। और साथ साथ में स्वर की साधना, या यूं कहें कि संगीत के साथ में साधना जो होती है, वो पूरी तरह से मेडिटेशन का रूप ही, भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा मेडिटेशन ही स्वर की या संगीत की साधना है। तो उसमें आपका मेडिटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हमेशा से ही रहा है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि भगवान की बहुत सी, हर हर सब्जेक्ट पे उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी उन्होंने जिसके बारे में उन्होंने ना कहा हो। लेकिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करने वाली उनकी कौन सी बात है? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो बात है, अगर जितने सुनते हैं या उनको मानते हैं, या जिन्होंने नहीं ये सुना वो सुन लें, उनकी समाधि पे लिखा हुआ है कि नेवर बॉर्न नेवर डेड, ओनली ट्रेवल्ड ऑन सन फॉर, जैसे मेरा है 1963 से लेके जब तक भी है। वी आर ट्रेवलर, वी आर नॉट रेजिडेंट हेयर, जस्ट ट्रेवल किया नाम। मैं जन्म से पहले भी जन्मा हुआ था, मरने के बाद भी मरूंगा नहीं, बॉडी नहीं हूं मैं। तो ये बात जिसने मान ली वो उसकी जिंदगी फिर उत्सव हो गई। जिसने इस दुनिया को रेजिडेंट जो बन गया, जिसने जो रेजिडेंसी जिसने कबूल कर ली, वो फंस गया। वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, डिप्रेस भी होता है। जिसने ये सोच लिया कि ये तो रैन बसेरा है, ट्रैवल कर रहे हैं, रात ही की बात है, फिर चले ही जाना है, उसको क्या फिक्र है, उसको क्या चिंता है। उसकी जिंदगी तो सबसे पहले तो ये एक ही सबक सीख लें तो कमाल हो जाए। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और चीज है खास तौर पे कि अगर हम देखें कि भगवान श्री ने हमेशा जन्म को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव रूप में कहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जब सोल किसी बॉडी में प्रवेश करती है तो सूटेबल कोख उस कर्मों बमूजब
कर्मों के मुताबिक उस सोल को जब गर्व मिलता है, माहौल मिलता है, तो जिस दिन जन्म होता है उत्सव होता है। और हर एक शख्स की मौत महाउत्सव नहीं हो सकती। जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, जिसने जीते जी ये पा लिया कि मैं मर नहीं सकता, मैं जन्म से पहले भी जिंदा था, आफ्टर डेथ भी जिंदा रहूंगा, उससे भी एक हाइट है कि उसको ये रियलाइज हो जाए कि आफ्टर डेथ वेयर आई एम गोइंग, कहाँ से आया हूं, आफ्टर डेथ कहाँ जाऊंगा। उसके लिए तो बिल्कुल ही आनंदमय है मौत, क्योंकि ये भांडा टूटेगा, ये अजाब जब जाएगा तो फिर ही अपने महबूब को ऐसे जप्फी डालेगा। तो किसको चाह नहीं होता अपने महबूब को मिलने का। उसके लिए तो परमानंद है। जिसने दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में दिल लगा लिया, उसके लिए सवा चीखो पुकार के कुछ नहीं। अरे भगवान, अभी तो नांद आने लगा था, अरे अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैंने इतने करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, अब अरे मैंने तो अपनी भाभी को बताया भी नहीं ब्लैक मनी कहाँ कहाँ रखी हुई है। ऐ भगवान, मेरी तो जायदाद भी बेनामी है, मैं तो अपने नाम पे भी नहीं ले सकता था कि करप्शन ही इतनी की थी, अभी थोड़ी मैं इसको एडजस्ट कर लूं, फिर मेरी जान लेना। उसके लिए तो ये अजाब है, मौत है। तो फकीर के लिए ये आनंद है कि ये जल्दी से जल्दी जब वो चाहे ये घड़ा टूटे, जिसको शरीर, वजूद, ह्यूमन बॉडी कहते हैं, फिर महबूब से जाके बसा लो अपने माशूक को, महबूब को, यार को। कौन नहीं मिलना चाहता। उसको कह सकते हैं, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाया पूर्ण परम आनंद। बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही हैं। और आखिर में चलने से पहले मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा। अगर हम समझें कि भगवान श्री की तरफ से या परमात्मा की तरफ से आपको कौन सा सबसे बहुमूल्य तोहफा आपकी जिंदगी में मिला है, वो क्या है? वो तोहफा ये जीवन है, इस बॉडी है। दिस इज सुपर क्रिएशन ऑफ गॉड, ऐसे कहा है कुरान शरीफ में। इसको इंसान को बोला है अशरफुल मखलूकात, सबसे अशरफ, सबसे बेस्ट। तो इस बॉडी को चाहे दोजख बना लो, चाहे पैराडाइज बना लो, ये शहर है अपने आप में, करोड़ों प्रक्रियाएं हो रही है इसमें। तो जिसने इस सेल्फ रियलाइज कर लिया, तो इस बॉडी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं, इस जीवन से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। जिसने डंगरों की तरह, पशुओं की तरह और गफलत में सोए हुए ही गुजार दी, उसके लिए ये गिफ्ट नहीं है। उसके लिए बस रोना धोना ही है। दुखी मन मेरे बस वो रह जाते हैं। कहते ना, आदत ही बना ली है तूने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। दूसरे लोग कहते हैं जिंदगी तेरी अता थी, जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, मैंने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। अब के तजदीद वफा का नहीं है इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बिन पिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। अब के मौसम की अदा देखी तो कुछ याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। हम तो रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हम तो रूठी हुए रुत को भी मना लेते थे, हमने देखा ही ना था मौसम हिजरा जाना। अब ये हालत है कि दिल तो अफसुर्दा है, दिल तो अफसुर्दा है, दिल की क्या बात करें, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना 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 जाना। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। एक आखिर में चलने से पहले लास्ट प्रश्न और मैं करना चाहूंगा आपसे कि आपके अनुसार भगवान का जो संदेश है, भगवान श्री रजनीश का जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए, आपके अनुसार वो क्या है? मेरे अनुसार ये है कि वो
यूनिवर्स के लिए, नॉट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, धर्म के लिए, मजहब के लिए, बॉर्डर के लिए, स्टेट के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, किसी देश के लिए नहीं आए थे। वो पूरी कायनात के लिए, जहां तक ये गैलेक्सी है, जहां यूनिवर्स है, साइंटिफिकली तो जितनी की खोज हुई है यही है कि वो जहां तक भी जिंदगी है, मालिक की क्रिएशन है, उसके लिए प्रे करो। पीस एंड लव का, लव खुद करो पहले, तो आपको पता हो लव होता क्या है। शांत रहो, आपको पता हो पीस होना क्या होता है। फिर पूरी दुनिया को लव एंड पीस का मैसेज दो, ताकि ये जिंदगी सार्थक हो जाए, आपका आना मुबारक हो जाए। नहीं तो जैसे पशु मरते हैं, डंगर मरते हैं, हजारों जुनियां हैं, करोड़ों जुनियां होंगी, ऐसी हमारी भी जुनी, कोई फायदा नहीं। मेरे हिसाब से तो जैसे क्राइस्ट ने कहा था, लव इज गॉड, गॉड इज लव, यही ओशो ने कहा है। यही कोई और आएगा सच्चा बंदा, उसका भेजा हुआ, तो यही बात कहेगा, मोहब्बत, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ लव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आकर के इतनी खूबसूरत बातें साझा की हमसे, और भगवान को लेकर के जैसा आपने पढ़ा है, और आपसे बात करके पूरी तरह से लगता है कि आप पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान ने जैसा कहा है, भगवान श्री रजनीश ने जैसा कहा है, ओशो ने जैसा कहा है, उसी तरह अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं। हमेशा अपने जीवन को आज इस समय में एक पूरी तरह से होशपूर्ण होकर के, जीवंत होकर के, आनंदमय उत्सव में होकर के जीना, और खास तौर पे शांति और प्रेम के साथ में जीना, यही आपके जीवन का लक्ष्य दिखाई देता है। तो इसी तरह से आप अपने खूबसूरत जीवन को और खूबसूरत बनाते रहें, और जिसके साथ में सारी दुनिया का जीवन, आपके आसपास के लोगों का जीवन बेहद खूबसूरत बनता रहे और चलता रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, और भगवान की कृपा आप पर इसी तरह से बरसती रहे, उसकी भी मैं कामना करता हूँ। थैंक्स अ बहुत लॉट बहुत राघव, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राघव साहब, मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। टीएनसी बदल रहा है, टीएनसी भगवान के रंग में रंग रहा है। टीएनसी लाइव अब है शैलेंद्र सरस्वती जी ने जो है यहाँ दिल्ली में बेहद खूबसूरत तरीके से इस पावन संध्या को बहुत खूबसूरत से तरीके से जो है उत्सव रूप में मनाया। उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। कुछ छोटे छोटे से वीडियोस हैं, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। चलिए आइए हम आपको लेकर के चलते हैं सीधा बेहद खूबसूरत कुछ और वीडियोस को लेकर के हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। गोपाल भारती जी का बेहद खूबसूरत गाना जो उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर जिसका अनावरण किया है, हम आपको वो गाना फिर से आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। लेकिन हमारे देश के अलावा विदेशों में अभी भी कई जगहों पर ये गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। तो गुरु पूर्णिमा का ये बेहद खूबसूरत गाना आप सबके लिए
बीएसआर मीडिया की तरफ से।
शिष्य की गुरु पूर्णिमा है। बिन गुरु के जीना क्या जीना, जीना क्या जीना, कितना है उनका उपकार, जिंदगी उनकी अमानत, सद्गुरु तो गुरु जिसको चुन लेते हैं, गुरु जिसको चुन लेते हैं, उसकी गुरु पूर्णिमा है। गुरु जो कहे उसे पूरा करना, शिष्य की गुरु दक्षिणा है। अपने गुरु के साथ चलना, शिष्य की गुरु पूर्णिमा है। शिष्य की गुरु पूर्णिमा है। शिष्य की गुरु पूर्णिमा है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम और आप सभी लोगों को नमस्कार। बीएसआर मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी हम यहाँ पर ओशो संगम यूएसए हमारे साथ में जुड़ गया है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जिस प्रकार से भी खूबसूरती से ये उत्सव मनाया जाने वाला है, तो आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। स्वामी जी थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लें ताकि सभी का चेहरा पूरी तरह से आ पाए जी। और बैक कैमरा सिलेक्ट कर रहे हैं सेटिंग में जा करके, जिसकी वजह से आपको जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। तो ओशो संगम यूएसए हमारे साथ में जुड़ चुका है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। और हम लोग जो है देखने वाले हैं कि वहां पर किस प्रकार से खूबसूरती से उत्सव यहाँ पर मनाया जाने वाला है। काफी सारे सन्यासी वहां पर एकत्र हो चुके हैं, जमा हैं। और अभी थोड़ी देर में यूएसए से, डैलस से भी एक जो है सेंटर यहाँ पर जुड़ने वाला है, जिसको भी हम लाइव यहाँ पर दिखाने वाले हैं आप सब लोग। Everybody say Osho. Osho. Mic na ba nila? Sama. Oh. नमस्ते स्वामी जी, क्या हमको सुन रहे हैं आप? प्रणाम आप सभी लोगों को जी। तो आपका जो सेलिब्रेशन है, मुझे लगता है कि शुरुआत की जाए आपके सेलिब्रेशन की, और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सभी के सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन तो स्वामी जी हमने संपन्न कर लिया या थोड़ा देर में कनेक्ट किया स्वामी बस। प्रणाम राघव स्वामी। सेलिब्रेशन
क्या आप हमें सुन रहे हैं स्वामी जी? सुन नहीं रहे हैं अभी। तो किस तरह से वहां पर सेलिब्रेशन होने वाला है, थोड़ा सा इसकी जानकारी दें सबसे पहले तो। स्वामी जी, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा अभी ओशो का गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन हुआ है। जो हमारे जो सारे सन्यासी है रेगुलर आते हैं, कई बार पूर्णिमा की चांद की तरह आते हैं, वो सब सन्यासी आज आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा अभी कीर्तन हुआ है, ओशो का ध्यान हुआ है, डांसिंग हुआ है, जिब्रिश मेडिटेशन हुआ है। और सबका आज गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही स्वागत है यहाँ पे। और आपने भी जो कल पूरा दिन और आज स्ट्रीम कर रहे हैं पूरे दुनिया और देश से, यूएस से कनाडा से, इंडिया से, सभी जो सन्यासी को जोड़ा है, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया है आपको। और ओशो को सत सत नमन। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे सन्यासी जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहला माइक स्वामी समर्पण और माँ निर्दुम को देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये फंक्शन रखा है। और जो इस आश्रम के आधार हैं। हाँ, ये आधार है। हम सीधा माइक प्रभात स्वामी से देंगे। स्वामी सबका नाम बहुत सुंदर बात है। मेरे बगल में ही यहाँ पर डायनेमिक मेडिटेशन चल रहा है। मैं अभी यहाँ पर ओशो ध्यान प्रयोगशाला करोल बाग में ही हूँ और पूरी रात में यहीं पर रहा। अभी सुबह यहाँ पर ध्यान शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में 6:18 हो चुके हैं। तो प्रणाम योग प्रताप स्वामी जी, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। हम जो है यहाँ पर निर्दुम माँ के घर में आश्रम बनाए, बहुत 7 साल हो गए करीब। और ये स्वामी जी और 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, लेकिन हमको अब वृद्ध हो रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो आश्रम है ओशो का, ये 9 साल से इन लोगों के संचालन में, इन लोगों के आधार से शुरू हुआ। कोई नहीं स्वामी जी, आप और कहना क्या है, अभी रोजाना देखो ध्यान कराने की कोशिश कर रहे हैं, और आज इतने लोग आए हुए हैं और आप से मिले और सारे दुनिया भर के लोगों से मिले, ये बहुत बड़ी बात है ना। सुनाई पड़ा कि नहीं सुना पड़ा? हम बोलते रहे, लगता माइक में कुछ गया नहीं। सब कुछ गया। राघव स्वामी जी, मल्होत्रा साहब, स्वामी जी, हेलो, हेलो। देखो यहाँ पर हैं हमारे विवेक स्वामी जी, कविता वगैरह बहुत अच्छा लिखते हैं और गाते भी बहुत सुंदर हैं। आज सुबह बात की। और ये एक दिन ये बिल्कुल ऐसे ही आ गए और आके पूरा दिन भर बोले कि जब तक हम संन्यास नहीं लेंगे नहीं जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे नए सन्यासी, और एक तो पूरा परिवार इन लोगों का जो है, माँ का सारे के सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन हैं, ये सारे 3 जो हैं माँ के दोनों भाई और माँ। और माँ ने ही स्वामी जी को भी संन्यास दिलवाया 25 साल के बाद। 25 साल के बाद। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा आपको, लगता है स्वामी तो सुनाई दे रहा है। आप आपको जो भी शेयर करना है या anybody else को शेयर इट। अब देखो यहाँ पर वो एक है, क्या कहते हैं, पुष्पा। हाँ, ये पुष्पा और पुष्पा कुछ है ना। पुष्पा को ये जो है, ये भी इस आश्रम के शुरू होने में बहुत बड़ा इनका भी हाथ है। और ये ग्रेष्मा है, ये वो भी इन्हीं की रिलेटिव है पुष्पा की। ये दोनों ग्रेष्मा गई, चली गई। हाँ,
तो इन लोगों का बहुत हाथ रहा और ये हमारे नितिन ये जो है एक्सपर्ट आदमी है, थोड़ा बिजी है, अभी आते नहीं है ध्यान करने, पर आज आए थे, माँ को भी लाए थे, बच्चों को भी लाए थे ध्यान के लिए। देखिए ऐसी ये हम लोग जो है आपको गाना पड़ेगा, बहुत दिनों के बाद चांद को देखा। I think they don't like it. वो दूसरी का जोड़ है, कोई और आज तो गाना पड़ेगा, गाना बहुत अच्छा गाते हैं स्वामी जी। नहीं हम तो ज्वाइन ही नहीं है स्वामी जी, तो अभी खत्म करते हैं। नहीं हम लोग लाइव तो है। आप लोग लाइव है पूरी तरह से, और मैं अपने आप को बैक स्टेज रखा होता ताकि आपका जो स्क्रीन है वो बड़ा रहे। जी, आप अपने बारे में सभी लोग परिचय दें, और परिचय के साथ में, क्योंकि मेरे बगल में ही यहाँ पर डायनेमिक मेडिटेशन चल रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अभी ये ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट कर लिया है, तो मैं आपकी आवाज को थोड़ा सा सुनने का कोशिश कर रहा हूँ। जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जो ओशो का बहुत ब्लेसिंग है, हमने वो यूएसए में जो ओशो का सेंटर, मेडिटेशन सेंटर खोला, वी आर सो हैप्पी and we celebrate each and every moment, and we have any special day, we never forget this one. So today is the big day for us, and we have lot of sannyasi in USA and we enjoying lot. So now I give to the Swami Samarpan. So we are actually, I would like to say this one, that we are blessed so much from the Osho, right? Osho is our true guru, and I have learned so much. I was like other people searching in vain, but as soon as I heard the Osho, it changed me totally. Just उठा के बाहर फेंक दिया, पूरी स्ट्रीम से बाहर फेंक दिया जैसे कि। तो मैं तो ये कभी भूल ही नहीं सकता कि क्या मेरा पता नहीं क्या होगा मुझे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होना है। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम विद ओशो, दैट्स ऑल आई कैन से। सफल को नहीं पुष्पा आ जाइए सर, फोटो ले बेटा। प्रणाम स्वामी जी, मैं सफल बोल रहा हूँ। यहाँ इतना तो नहीं आता पर आज आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरु पूर्णिमा में सब गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, सब गुरु को प्रणाम करता हूँ, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मजा लग रहा है आज। You want to say something? मैं बोलूंगा। Okay. गुरु पूर्णिमा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आया हूँ सभी फ्रेंड्स के साथ। आई होप मैं एंजॉय करूँ नेक्स्ट टाइम फिर। और पुष्पा पुष्पा को दे दे। पुष्पा आगे। राघव जी नमस्कार। कुछ बोलना नहीं आता राघव जी मुझे, क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है। ओह माय गॉड, बोलने का कुछ भी नहीं, शब्द ही नहीं निकलता। ओशो जिसके पास है सब कुछ है, कुछ भी नहीं चाहिए। राघव जी एवरीबॉडी सुबह से शाम तक ओशो के साथ, जब मौका मिले ओशो के साथ। क्या बताएं, सब रो में ओशो है। क्या बताएं ओशो के बारे में। बहुत साल हो गए, लाइक 2005 से अभी तक ओशो ही ओशो है। रास्ता इतना लंबा है कि कभी पहुंचेंगे ही नहीं। इतने साल हो गए, कब होगा वो दिन, कब आएगा। लाइक इतना साल लगता है, इतने 10 साल 15 साल 20 साल जितना भी ध्यान करो,
कुछ होता है, बढ़ रही हूँ, ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ मेरा आई एम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो ओशो जैसे बोलते हैं वो भी हो रहा है, लाइफ में होता ही रहता है, लेकिन ओशो जो बोलते हैं कि वो दिन आएगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे एवरीबॉडी एंड राघव जी, थैंक यू सो मच मास्टर, मेरे सदगुरु ओशो and all the sadgurus in the world, जिसके जिसके समीप में आके हम लोग ने कुछ सीखा, कुछ अपने आप में कुछ ग्रोथ हुआ, वो सब के लिए आभारी हूँ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीबॉडी। थैंक यू ओशो, लव यू सो मच, जितना भी बोलूं इट्स नेवर इनफ, लव यू सो मच। आज ही जीवरेश ने ओशो ने सबको बुद्ध बना दिया है और कहा है कि हमेशा याद रखना कि तुम बुद्ध हो। अब इनको याद रखने की बात इनके ऊपर है। पापा बोल दिया, माँ आप भी बोलो कुछ। चलो धन्यवाद स्वामी जी। नहीं थोड़ा बोल आज बड़ा तो बोल अरे यार आज थोड़ा गाना ये लीजिए स्वामी धनादर्श फिर से आ रहे हैं। Thank you Swami ji again. It's nice seeing you again. We spoke this afternoon. So I don't have any things to say at this time. Just few words to our master also. Purnima ko jun ho ya sunai sun ho. Purnima ko jun ho ya sunai sun ho. जो सुकै हो गुरु तिमी मनको धुन हो, जो सुकै हो गुरु तिमी मनको धुन हो। We're gonna do like 1, 2, 3 Osho, okay? Everybody, try to get as close as possible, okay? So, 1, 2, 3. Osho! 1, 2, 3. Osho! Thank you Raghav Swami ji, thank you, God bless you, thank you। कनेक्शन है राघव जी, सुनाई पड़ता है। ओके स्वामी जी, हम आपसे रजा लेंगे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जिस प्रकार से खूबसूरती से आप सब लोग विदेश में बैठ करके भी इतने खूबसूरती से ध्यान को के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का जीवन धन्य है, कि आप सब लोगों को सौभाग्य, या हम सब लोगों का जीवन धन्य है कि हम सब लोगों को सौभाग्य मिल रहा है भगवान से जुड़ने का, निरंतर जुड़े रहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नमस्कार, प्रणाम आप सब लोगों। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं बेहद खूबसूरत अगले प्रोग्राम के साथ में जोड़ते हैं हम आप लोग। एक पिक्चर ले लो बता चलिए। I'll talk about significance of Guru, how it has affected my life. Rather than going by books or talking about anything, I'll try to share my experience traveling and meeting 7 different masters and 4 schools of meditation, and how I ended up meeting Swami Anandarun and Osho. So I'll talk about that a little bit, and then we'll have dinner. So hopefully you'll all enjoy the event, and we'll start with a Guru Vandana. Thank you. So actually, I don't have a mic, so I will be projecting my voice, and it's really sitar and vocal. And I want to thank Swamiji and team for inviting us and making such a beautiful arrangement. My name is Amy Manchishevsky. This is Swapnil Bouquet.
and we will play sitar and tabla and sing a bit. We're playing Hindustani classical music, and I learned this Guru Vandana from my vocal guru, the late Padma Vibhushan Girja Devi, who was a very famous classical singer and also a very, very spiritual person. So it talks about how the Guru helps remove obstacles for realization and consciousness and takes troubles away. And how you never get tired of seeing the Guru's face, because sitting at the Guru's feet is the greatest joy that you can have. So with your permission and with gratitude to the Gurus who have shared knowledge with us with such generosity, my music gurus who've showed me the Nad Samudra, the ocean of Nad, which is the eternal sound, the cosmic sound from which music comes.
बस परे करवंदे गोविंद के प्रिय जीवन बस परे करवंदे गुरु के निवाज सो गोविंद के जीवन बसवाम साजन गोविंद के जीवन बसवाम साजन सुंदर करत गुरु मारे ताकत नाम शरत बराई ताकत नाम शरत बराई गुरु के चरण में तो आनंद So I just have to tune a little bit for the next piece.
So tuning is very important in our music because the old masters say that because the swaras or notes are vibrations in the universe, so if it's out of tune, it causes inauspicious vibrations. So that's why you have to have it in tune, and because it can be harmful. So this is a raga. Raga is the melodic framework in classical music, and the ragas are very much connected to nature and spirituality in the universe. So one of the things is ragas are meant, certain ones are meant to be played or sung at certain times because you have the different prakars of the day. The day is divided into and the swara combinations, the rasa that they create is in tune with certain times of day. And very important prakar is Sandhi Prakash, is the sunset, which we're getting pretty close to that. So it's when day and night blend, and it's the time, it's said it's the time of meditation, the time of yogis, because the it's not so clear cut between night and day and light and dark. So it's an in-between zone. So this is a rag for that time. It's called Marwa. So first I'll play an alap, which is the part without tabla, to kind of get into this state, and then the tabla will join in. Sorry? I'm not interested in is that
स्वामी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूर्वेश स्वामी जी वहां पर अगर सुन रहे हैं मेरी बात, कि म्यूट हो गया आपकी तरफ से, उसे प्लीज अनम्यूट कर दें ताकि हम भी इस संगीत का भरपूर आनंद उठा पाए। स्वामी जी म्यूट हो गया है, काइंडली अनम्यूट योर माइक। माँ प्रज्ञा, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि गलती से शायद वहां से म्यूट हो गया है, तो अनम्यूट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि हम लोग भी इस खूबसूरत इस प्यारे से म्यूजिक की जो संध्या है इसका भरपूर आनंद उठा पाएं। चलिए हमारे साथ में बने रहे, हम आपको जो है किसी और म्यूजिक से यहाँ पे परिचित कराते हैं। इस हमारे साथ में बने रहे। प्रभु बिन सूना है घर मेरा, प्रभु बिन जीवन है अंधेरा। ओ प्रभु बिन सूना है घर मेरा, प्रभु बिन जीवन है अंधेरा। तू ही जीने का सहारा, तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया, तू ही है किनारा। तू ही जीने का सहारा, तू ही मंजिल में बंजारा, तू ही केवैया, तू ही है किनारा, तू ही किनारा।
हमारे साथ में बने रहे। थोड़ी ही देर में माइक दोबारा से अनम्यूट करके लॉग इन किया जाता है। ब्यूटीफुल। तो अब इस खूबसूरत संध्या का वहां पर आनंद लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी समय पर रात है और हमारे हिंदुस्तान में दिन है। बेहद खूबसूरत ये आयोजन ओशो यूनिवर्सल डैलस यूएसए हमारे साथ में जुड़े रहें, बने रहें इस खूबसूरत आयोजन को, संगीतमय संध्या को आनंद उठाने के लिए।
Thank you very much. Swapna. So, and I want to say my errors are mine, not my guru's. So if I make mistakes, it's mine. So. First, I would like to thank Amy and Swapnil for creating the environment of meditation, taking us beyond the mind into the hearts. We came here with a lot of thoughts from the work, and that's journey of meditation is 3 steps: from body to mind, from mind to heart, and heart to your being. 4th step you can add, being to non-being. So you don't exist anymore. So few minutes we have glimpses of meditative silence, and it was beautiful. Beautiful. So now, while we're here today, everybody is aware we are celebrating Guru Purnima. It is remembering everyone who has realized there are thousands of monks and thousands of meditators over the years who have meditated and became enlightened, you can call it, reached nirvana, or whatever name you want to call it. They found peace, they found it in devotion, through meditation, different paths. Out of those thousands of people who meditate, I would say hundreds of thousands who meditate, few thousand people reach the peak of meditation. Once who reach, out of that, only few are able to express. Not everybody can express it. And few who can express, very few can articulate in words. It's a very rare phenomenon to have a enlightened being. First, he reaches. After reaching, he has capabilities and ability to express. Then he chooses to express. So maybe, or many people become enlightened, they will remain silent. It's this unnecessary mess. Trying to communicate something that is hard, that is experienced in words, is almost impossible. So I'll give you a simple example. Suppose I give you some sweet to one of you. You taste the sweet, and now I'll say, explain what it tasted like to other guy. Almost impossible. You can keep saying it's this, it's that flavor, this flavor. You try to relate to what they have tasted. But they say, no, I cannot relate to it. It does not have the flavors that I have tasted. What will be the easiest way to do it? Take a piece and give it to him. Take it. Why ask me so many questions? Just try it. So I always say that what I learned from my guru, say that meditate. Don't talk too much about it. Just try it. Give the glimpse of it. People will know what it is. Once they know what it is, they will not ask too many questions. So we'll try to do small meditation right after I talk for a little bit. Another thing is, what is Guru? What's the need of Guru? So when I started as a teenage boy, I was never interested in meditation. That was the last thought in my mind. Who wants to meditate? It's boring. It's waste of time. Why in the world do I care? Why do I care to sit? Why do I care to listen to music? Doesn't make sense. But journey cannot be started with desire to meditate. So one has to be aware. Journey can be started from where we are. So where we are, we may be in search for money, we may be in search for peace, we may be in, if we are little mature,
money will be secondary, then we come to peace. Because I have seen enough money. Most of you have already, otherwise you won't be here. Many of you would, and now you are here, so there is something that's brought you here about meditation or Guru Purnima or Osho or me, whatever it may be. So, but when the search begins, it cannot begin through enlightenment. It cannot begin through meditation. It cannot begin through devotion. That is wrong beginning. Beginning will happen from my desire. What desire I have in life? It's a desire of love, desire of joy, desire of power, or desire of money. 4 desires we live by. Everything else serves to achieve those one of the 4 things. If somebody wants fame, they want beauty, they will go for that path, and their money will be served for that. So they want to be more and more famous, they'll use money to become famous. People who are interested in money, they will use their fame, their beauty, their intelligence, their body, their mind to make money. So that's one way to do it. People who want power, they'll use body to become powerful. They'll use their brain to become powerful. They'll create atomic bombs. They'll create the most powerful weapons in the world. Or they'll create muscles on the body. So they will want power and strength. Then there is a desire for love. Now, when desires become more pristine, when you start become connoisseur of more and more, better and better alcohol, you need to have better. I can't go with beer anymore. Once you've tasted the shots or a good scotch or whiskey, who cares for beer? Nobody wants to go for beer. Scotch is better, or wine is better, older the wine. So like that, as we become mature in life, we start desiring for something better. So love. That money cannot buy, fame cannot buy. Meditation, peace. Now that is where journey can start, of inner journey. For me, it started with love. I never cared for anything else. For me, it was love, but as teenage, you fall in love, you get hurt. You fall in love again, you again get hurt. You watch movies again, you learn again what that Shah Rukh Khan is doing, and maybe that's what it is. And you try again, and again you get hurt. So when you keep getting hurt again and again, you feel like, what's going on? There's something wrong. I need to find something else. So my inquiry was love and death. Death was somebody died, and I was like, okay, this death is real stuff. And if I die, what will happen? What's the point of living life? Inquiry of death was there. And then came falling in love. It's again, love, I felt like, even if I die, it's okay. Fear of death disappears in love. If you would have observed, whenever we are in love or joy, fear disappears. Death goes away. So then I thought, one of them I need to understand. Death was difficult to understand. There's no movies made on what is death. What is love? A lot of movies. So watching movies and listening to songs, I became inquirer of love. And slowly, when I heard Osho talking about once, he was talking, I overheard the conversation. I was not listening to him. Somebody was listening and I overheard. My dad or somebody might have been listening at home. He was saying that everybody's a beggar here. Everybody's a beggar. Husband from wife, boyfriend from girlfriend, parents from kids, kids from parents. Everybody's asking for love. So one thing for certain, nobody knows where it is. Or at least they think other has it. They don't have it. And that is for certain. If you are asking, that means you don't have it. Otherwise, why would you ask for it? Correct? We don't have it, so we look for it. So Osho went on to say that if you are going to go to world when you grow up, going to live the life, have kids and wife and family, don't you want to be having the source to give them something? I said, yes, this makes sense. I need to know where it is. I've been struggling anyways, falling and hurting too many times. So I need to figure out where it is. So in search of love, I started reading books from wonderful monks, Kabir. I read books from Kabir, Meera, Dadu. Osho commented on a lot of these people. And he has books, Path of Love. Then he has a book called Until You Die. I was like, man, this is interesting. So I started reading those books. 7 years of reading made me egomaniac. Oh, I know everything. 7 years of reading knowledge books of all kinds and this 1, 2, 3 topics. I know everything about this thing. But then no, inside is empty. So there is no feeling of it that I know. I only know it mentally, intellectually. So intellectual knowing was not quenching the heart's desire. So I was like, what's happening?
I know everything, but still I feel empty. That emptiness is never leaves us. But eventually, suddenly it happened. One talk came and said, you need to find Guru. One Osho's talk where he was saying, you need to find Guru. If nothing is happening, you're feeling empty inside, even my techniques are not helping, find a living master. So that's when my journey started. I started looking for a living master. I found him in a grocery store. I was surprised. I said, grocery store sells grocery and food, and I said, I found Guru over there. Very surprising thing. So I was there and there was a flyer. Small flyer with a phone number. So I was there. Well, you can buy Guru nowadays, I can say, grocery store. It doesn't cost you. You just need to take the number. So I found a flyer in grocery store. I said, okay, this guy claims he's enlightened. I don't know. I am naive. I don't understand all this. But he claims he may know something. I should meet him. So like that, my journey started. In 2001, when I went in search of Guru. Before that, I met one more monk, but I was not in search of him. He accidentally met me, and I accidentally met him. And but now when I found this person and I went there and I had the conditions and then I met, he was teaching yoga and Kriya Yoga, beautiful technique of meditation. I learned wonderfully. It healed my body. I was sick at that time. It healed my body. It healed my mind. Gave me a lot of strength to come back. Then I said, this is boring, but I'm feeling good. I'm healing, but it's boring. So then I was looking for another guru. Then I stumbled on one more master who was bhakti, or devotion. So I learned devotion. So, but I didn't give up on the first one. I was free. I didn't like drinking. I didn't like to go to clubs as much. So I was like, I had too much time on my plate. So a 20-year-old have so much time, what to do? So another master, I added one more to my list of meditation. So I started doing devotion at that time. Because I was in search of love, they were calling divine love. And I was always looking for regular human love. I'm not very crazy about divine. That adjectives I don't like. I like simple human love. So that's what I was searching for. And I said, okay, let's see what they are saying divine. We'll figure out what this flavor is. So I joined them and started learning devotion, and we'll go to the temples and singing and chanting and singing and chanting and music. I felt good, but still my intellectual quest was not being able to give 100%. I was not able to. Then I found one more master. Okay, one more is needed, somebody else. Then I met Art of Living founder, Sri Ravi Singhal. So with him I meditated for 5 years also. So 7 years, I started journey in 1999, 2000, 2001. So now by 2001 I have 3 schools of meditation in my list. So every time any event these people are doing, I'm there. And they all know me today also. But then I was like, okay, I'm meditating with them. But my heart was connected to Osho. Because I started reading at 15. Through him is what I started search for love. So I was like always thinking, all of these schools are there, they're very good, but I'm still looking for someone who can initiate me, who can connect me to Osho. So my heart was always incomplete. Something was incomplete in me, I was feeling. And suddenly it happened in 2007. After 8 years of meditating with 7 different masters, I met the junior teachers and their teachers. So I met multiple layers of enlightened beings in different schools, spent time with them. They gave me a lot of interesting healing, energy. Many times I'll sit in presence and just cry. Sit there in their ashram, tears will just come. Because it's there, and it's there, I have not let it go. And I also felt that how many years I've been looking in wrong direction. I was going left or right, and I was supposed to go this way. Without GPS, you try to find places and you keep going in circles. So without Guru, Guru is a God positioning system. You call it GPS, God positioning system. GPS of God. So Guru becomes GPS of God, and I was not still convinced that any of these teachers will be able to help me, because I was very rebellious in my mind. I didn't want to give up anything in life. Still, I wanted to understand what enlightenment is, what God is, what love is. So problem was Kriya Yoga, they said you need to become monk, no sex, no food, no alcohol, no this, no that. I said, this I cannot do. I can heal myself with your techniques, but I cannot give up anything in life. Because Osho said you don't need to give up anything in life. I had that in my mind. So I was like, with that is possible, then why give up? So my mind was convinced that without giving up it is possible, then I wanted to go that path. Every teacher was doing something, but everybody had something to give up. Then I said, no, I need to find Osho's teacher. In 2007,
Swami Anandarun, my guru, he came here to Dallas. I have a big picture of his on the table. I don't have it here, but if somebody can, we have a big picture of him somewhere. After this, in the bag or it should be on the table. So he came to Dallas and he was giving initiation into Osho Sannyas. So that's when 2007, I ran halfway from work. I just said, I want to take sannyas initiation. And sannyas initiation means, in Osho's path, I knew that you don't have to give up anything. You just connect to the master through sannyas. I did not know much meaning of sannyas at that time, or I didn't even understand. So I went and took initiation instantly. That day, he gave me initiation. That very day, because of 14 years of going around, my heart was ready. And that very day, something happened. Very day, some energy took over and created certain boundary around me. I went home. First, I passed down. First, he told me, you took sannyas. There's a process. So he gave a process of sannyas and he makes you sit here and he will have this chanting, will start music. Then he'll surrender, then he'll touch my hand. And then he touched my forehead. And then he touched a mala to his forehead and gave it to me. And he put the mala on me. Simple process, 7 minutes, 10 minutes it took. And then he touches the forehead of your heart and you lie down. And I lie down and 5 minutes later, everybody's gone. Everybody's there, but I stood up. You done? Now can I go? So he's looking at me. This is the quickest sannyas I have ever given. No meditation, no prerequisite, nothing. He just came, took sannyas. In Osho school, there's no prerequisite. So I said, I can go. No, you wait. You don't go. He said, you eat something before you leave. I said, no, I don't want to eat anything. 4 o'clock in the afternoon, who eats? No, you have to eat something. You come eat something. So I said, and he lovingly said, what will you eat? I said, okay, just get. I didn't want to give trouble to the host. I said, give milk and cereal. So I had some cereal and milk. I got in the car. I started driving. I was like, I felt dizzy. I said, what's happening? I'm not feeling sleepy. So suddenly I told her, maybe I didn't sleep last night properly. I'm feeling sleepy. So I went in the back seat and lie down. And she's talking to me and talking to me. Wait, I cannot hear you. As if you're talking from some far away tunnel. I'm sitting and listening. Looks like I'm very sleepy. You be quiet. So she became quiet and I reached home. That day I didn't realize what happened. But next 6-7 days, it continued. People are there, they're getting upset. And normally when they get upset, I'll react. But I'm not feeling anything. They're just doing their thing. And I was like, okay, they're upset. Nothing is touching me. So I was feeling like as if I'm shielded by certain womb of energy. 6th day, 7th day, it started touching me again. I said, oh my goodness, I lost it. What happened? Some superpower is gone. So that's when I realized the glimpse of meditation, power of becoming aware of energy that we are. We're not the body. That day onwards, I didn't want to read anything. I never wanted to read. Some people forced me to read some books, but then I never want to read. I just want to meditate and understand what this is. So that is my journey. In very short, I put it up. 14 years of my journey. And that time I asked, next time when my guru came to Dallas, I asked him one question. That you are so old. I was very blunt. I'm an IT programmer at that time. Think about it. Don't have very emotional intelligence kind of thing. Was missing in me, I felt. So I asked him a question. You are so old, your beard is white. Who will give sannyas when you leave? I just abrupt in the middle of 50 people, I asked the question. And everybody's looking at me. Look at that guy. He's talking about Guru dying. What will happen after that? So he said, no, don't do it. I'm going to prepare 100 people before I leave. So that time, I don't know what came to my mind. I was a little scared, but he was leaving that day. I said, you know, you're looking for 100 people, you said. I don't know if I'm capable enough or I have capacity to. But if you feel I'm fit enough, you have found one. Think about it that way. I will be willing to help you out. So he left. After a few years, I realized this is exactly what happened to him when he met Osho. Osho had said, I'm looking for 100 people in 1960s, 63 or 69 sometime. I'm looking for 100 people that I can change this world, make it a globe of love, peace and compassion. I need 100 volunteers to come and be with me. So that story I came to know 3 years later. And at that time, Swami Arun was there. He told Osho different way. I was very scared and worried. He said, no, you have found one now. I am here, you don't need, now you only look for 99. So very interesting when I heard that story 3 years later, and when he published his book, we have that book here.
So it was very interesting to me that similar thoughts repeat sometimes. And ever since then, 14 years, 13 years passed. And one time he was here, he made an announcement. Now anybody wants sannyas, they can go to Purvesh or Swami Paritosh. At that time my name was. Now it's Swami Prem Maitra. You take sannyas from him. And I am like, I don't want to give sannyas to anyone now. That 13 years ago I said that was just out of something that came, and now I'm not wanting. I am meditating, I'm enjoying. I don't want to do anything. I just share meditation. That's enough. I don't want to. Sannyas is a drama. It's whole shebang starts, and it's pretty interesting. People will start crying, energy will start flowing, things will happen. So I say I don't want to do it. So 1 year passed, and he calls me up. Did you give sannyas to anyone? I say yes, I gave it to one guy. Only one guy whole year. Okay, did you do any event celebration? Yes, I did all the events. Did you write in the flyer you offer sannyas? No, I didn't write anything. How many people know? I don't know. You told people so they'll come. So the next year again, 1 year passes. And he told me, how did you give sannyas? So I didn't touch the forehead, I didn't touch the hands, I didn't give the mala with this like that. I just put the mala there. 2 ways of giving sannyas. You put the mala, let the guy take it himself. So I said, that's easier way. I don't want to get into the drama, so I just put the mala. And he said, no, that's not how you do it. You do it exactly the way I do it. Don't change the process. There are other teachers who do it that way. You don't follow them. You follow me. Do exactly the way I do it. So I think now he's getting me in trouble. Now by then, I'm a businessman, very well known. We have bought Phanesia and community people know me. So I'm feeling awkward and worried. So then people from other schools know me. Your guru tells you, you should do it. Why are you putting your head to work? Why are you not using your heart? He's telling you do it. So then I ignored. Again 1 year passed. And somebody called me from Corpus Christi. Saying that you come, we want to give sannyas. Here 9 people want to take sannyas. I said, who told you? The Swamiji told us that you give sannyas. I was like, okay, I'll come. One thing I don't say no to, when somebody wants to meditate, but they want to take initiation, at least that much commitment I make to myself and my guru, that I will not say no to that. I'll come, I said. During COVID, I did not know the process. I went there and I realized there was an epicenter of COVID in Texas, in Corpus Christi. I had no idea. I reached there and then I went to the hotel and the hotel guy says, you want to stay in our hotel? Our hotels are filled with all the COVID nurses and doctors. And you don't think you want to stay here? I was like, that's the only booking I have. But then the host called me. They're living in 1-bedroom apartment kind of space. So they said that this is a problem. No problem, you stay here. So I stayed at host place. And that night we gave sannyas. It was craziest night that I started. The first time we gave sannyas. Lightning fell just right behind the house. So caught fire over there. Before I went from the house to the hotel, there was no mosquitoes. But when I came back in half an hour, the whole house was filled with mosquitoes, thousands of mosquitoes. Not hundreds of mosquitoes, everywhere mosquitoes. And something had happened, some rain or hurricane or something like that. So that night we gave sannyas, and that's ever since then. Now I offer sannyas to anyone who wants to take initiation, but not today. Today it won't happen. Today it requires preparation. People come for retreat program that we do on 3-day program. That's when we offer initiation into sannyas. And that is most important part. Why I'm talking so much about it? Because connecting to Guru, like we connect to wife or husband by wearing a ring. We go to marriage ceremony. Then hearts connect. Or even before, nowadays you start living in together. Physically you come closer to your spouse or girlfriend or boyfriend. So that connects you to the person, physical proximity. If your husband, wife or kid is sad, you feel it. Why? The neighbor's kid is sad, you don't feel it. Why? Because we have opened our mind and heart towards our relatives. So we are connected to them at energy level. To connect to master, to energy level, the touching of the forehead. And mala to protect, just like we wear ring. Ring to remind us that I'm married or I have commitments. So nobody will look at you that certain way. Once you say, oh, he's already married. They will not look at it that way. So it changes the perspective way people look at you. Same way when you take sannyasa initiation, there is book here, the sannyasa mala. Some people can take that and read that book. That will give you an idea what all mysterious things happen around that. For me, I have many experiences I can share, but limited time we have. And so we have the few things other to share also. So for me, one thing I would like to put something in Osho's voice about
guru and disciple. So I would like for him to, we would like to say a few words from him. My phone, I will need that. Yes, this one. So I'll put a few words from Osho, 5 minutes, and then we'll do short meditation, then we'll have dinner. We're running a little behind the schedule. Give me 1 second. Yes, there we go. And this Guru Purnima day is the day of all the Buddhas, all those who have become aware.
illusion on this planet is illusion of I. We think we exist. That's the biggest illusion. We don't exist. That is, when you will meditate, when you will go in love, deep in meditation, you will go and find deeper and deeper you go, the fear will come because you will see you don't exist. And that's the biggest fear, I don't exist. Layers and layers and layers. And day you will see you don't exist totally, you will feel like dying. But that is real birth. Up till now we're just living in illusion that I exist. But day we realized I don't exist. It was just something society gave it, so I was carrying it. With that, I would like to felicitate one of the guests here. I would like to give her some books of Osho and call her up here. And also, I would like to call Kushmanji, both of them. I would like to felicitate both of you guys. So, first thing, I'll give you a brief introduction of her, but I will let her also give her introduction. She is a director of Crow Museum of Asian Arts, if I'm not wrong. You got it right. Correct. And from the Parod family, she manages the art collection, Asian art collection. She is between us. She has been chief guest on many, many stages. Over the years, I have seen her on stages all the time. And I'm very fortunate for her to be able to make to this event today for us. She specially created time, not only came, she also brought her friend with her. And I don't know her much, but I'm sure she is someone very commendable and known also in her own field, in her own ways. Other person I would like to felicitate is Gushman Baveja. He is also very accomplished senior executive of TI. He has worked and served, and his wife, both of them. His wife is also very accomplished, very educated, and working at very senior position in Collin County Community College. And Gurshamanji is working for TI, is a CIO of TI. About 40,000 people working under him. He's here with us today also. So both of you, I will welcome both of you come here, say a couple of words if you want to share anything. And I would like to give you some books of Osho from my side. Please. Thank you. Thank you. Okay. First of all, thank you for the wonderful blessings of your music and singing. And the tableau was wonderful too. Thank you. I am Amy Lewis Hoffland. I'm so honored to be your guest tonight. Thank you. And we met auspiciously at the Asian Festival 4 years ago. Yes. So time is empty. It feels like yesterday. And I do serve as the director of the Crow Museum of Asian Art. How many of you have been there? We need more. I thought you had played there, yes. This is our second time, yes. So this is a little museum in the Dallas Arts District, but it is about to become a larger museum here in Richardson, Texas. So we're building a 70,000 square foot art museum for the South Asian community, for the Chinese community, Japanese community. It will open in 2 years. And it is a pearl. I've been thinking about it a lot as a pearl, a space of silence. It's so lovely to sit with you tonight because we have to find these spaces of silence, awareness, togetherness, and understanding. And this is what I am committed to in my work. This is an art museum that celebrates the traditions of culture and art, Buddhism, Hinduism, Jainism, also contemporary art. But it is also a place of connection, love, and compassion. And so I've felt very called to lead the museum as a place of inter-dialogue, where we see each other. And I'm so grateful that I can be here tonight. Thank you. I love Funasia. It's been a very important friend to the Crow Museum for a long time. So if you're interested in these things and interested in spaces for meditation and yoga, that's what we're up to at the Crow. So thank you. Here are a few books that I would like to give you. Oh, thank you. There's a beautiful book of Osho that says, "Nothing fails like success." Wonderful. This is a book of Swami Anandaram, who is
my guru who initiated me into sannyas. This is his life journey after he met Osho. Okay. Is a prequel to this, that is before he met Osho. So that is there, and this is our book of our ashram with some quotations with address and details on there. Beautiful. And there is one more book in there. I love the phrase "in wonder." Thank you. Aren't we all in wonder? Thank you. So that is for you. Thank you so much. Bushmanji, please come and say a few words and share. How are you feeling? Okay, so I'll stand and just say a few words. First thing, I'm not prepared, right? And it's a tough act to follow after Amy. Couple of things, I mean, it's fate, right? Amy, I have met Amy on Zoom over the last 3 months, maybe? Yes. Maybe, 5 months or something like that, 4 or 5 times. I've never met her in person. And now, I'm looking at this, looks very familiar face. When I was sitting there, and when he introduced, and I realized who she is. And we had been on the Zoom call trying to talk about cultural festival and things like that over the last 6 months or so. So that's how I met her. The other thing I'll tell you is again fate, right? As I was sitting there, I was telling my wife, right, that we're going to go find some books after this. And I didn't tell him. I didn't. I said maybe I could ask Pravesh what should I start to read with. So and he didn't know that. And I was just telling her while I was sitting there, that's what we're going to do today. So there is some energy and connection somewhere, right? That he's going to pick the books for me. The third thing I will tell. 2 weeks ago, I think 2 weeks ago, we went to Denison, the ashram. And, I called him on Friday night and I said, we're going to come tomorrow, Saturday morning. And he said, come, we like to start at 8 o'clock. And I said, Pravesh, if you say 8 o'clock, we'll be there, 7:45. So you really mean 8 o'clock, right? He said, yeah, 8 o'clock. So, and then he calls me Friday night at 9 o'clock again, right? This was Friday morning, and he says, "You guys coming? I'm going to arrange some food for you guys." And Auntie was nice enough to send some lunch for us that day, right? And 3 of us, me, my wife, and Pravesh. We were there, and we planned to come back around 1 o'clock, 1:30, and we got home at about 11 p.m. at night. Okay, we had 4 or 5 sessions of meditation. We relaxed, rested, right? I can attest to, right, that you will not know how the time passes. It went by flying, the whole day. We were there, whole day, and came back at 11 o'clock. And, the Sita's promised we're going to go back again this weekend, right? So we're going to, try to do that. But I tell you, it is very, very simple techniques. And I'm not an expert. This is, first few times I've kind of got exposed to it. Simple techniques, but you feel calm. You feel relaxed. I mean, those things are not easy in the life, day-to-day things we do. And I can promise you that happens. And we had the examples, and it took us, we spent the whole day. So thank you, Pravesh, for introducing us to it. And we look forward to a lot more of those. Absolutely. Thank you very much. That's the books for you. Thank you. Sir, do you want to share something? You are? Pleasure. Thank you so much. So again, I'm not the guru. I'm just a disciple and seeker like you. Remember, guru is one, Osho, Swami Arun. For with me, I'm just a traveler like you. We're meditating together. I have done it for a little longer, 25 years. So I may be able to add 2 cents of knowledge here and there. But when you come to the ashram, we meditate together. We have a wonderful place there. This is a plan over there that we are trying to build. World Harmony Park and Spiritual Village. This park will show how each religion has tried to bring harmony to the world. And Osho spoke on every religion. You'll see his quotations all around the room. When you get a chance, you can walk around and read them. Over here, we'll be building first, we want to build a meditation hall
because our current space has about 10-15 people we can accommodate for meditating and yoga. But if you want anything larger, we have a hall which works in spring and fall. If anything outside of that, it doesn't work because it's too cold or too hot. So our vision is that this year we are starting with this event. We start the fundraising. We already have commitment of land, about $2.1 million worth of land is being donated by the family. So I would like my brother to say a few words about that. And my mom is here. She, when we came here, she said, "Can I give money for the hall, meditation hall?" I said, "Yes, you can." So she's, and my aunt here, they both have said they will give some commitment today. So I was like, well, I have not asked for it, but definitely it's coming, so I have not said no to it. So thank you very much for that. So Sam, do you want to say a few words about it? Please, thank you. Well, thank you, Purvesh, putting together a fantastic, program and, on this auspicious days. Thanks to everyone for coming in. As Purvesh mentioned, if Purvesh considers him as not a guru and not this thing and as just a disciple, I don't think what I can call myself. But I do technically once in a while go swing by, and I'm very unplanned from the perspective. But when my mind tells me, I go there, and it definitely is a good thing to learn. I always say that meditation has a lot of scientific mechanisms to it. If you really understand art of living, Osho or any other mechanism, they do concentrate a lot on breathing, a lot on yoga and those things. So it has a lot of additional side benefits to it, apart from, calming your mind and those things as well. So I strongly recommend that please explore. I have attended, met a lot of people. I've met, recently I got an opportunity to even meet Sri Ravi Shankar as well. So from that perspective, I'm definitely blessed, to have everyone. We are just, as a small thing as part of our family, we're committed to donate a land to this cause. And it's not too far, it's a beautiful place if you take your kids along. It is right on the entrance of Eisenhower State Park. So you can technically spend a whole day. There's a marina there, so you can rent a boat there. You can just take your kids to the state park, has very interesting and fun, beach and those things over there. And right when you come out, right on the outside of the, Eisenhower State Park, we have this property here, which you donated about, 20-acre land to develop an ashram and many other things attached to it. So I hope you guys can enjoy it. At the end of the day, none of us take money with us. We all, do work hard. And at the end of the day is to do something good for the, people around us, organization around us, and connect in small way. So this is a small initiative from Thakkar family side to do something good into the local community where we stay and live as well. Thank you again. So, you want to say what you're getting the check. Oh, I didn't expect that. I was just getting commitment, I'm getting a check. So very good. So we have a check of $5,000 to start the ashram. Our goal is to have $500,000 to get the first hall done. That hall and small garden will be done with $500,000. God bless you and you. Thank you. Thank you very much. It's another $5,000. So your $10,000 commitment check will receive. So I hope that we will get this ashram hall done as soon as possible, so more people can come and meditate there and experience peace of mind. So anybody has any questions before we go into meditation? Anybody has any question to ask? Anything they want to say? And before, we will also light the lamp for Guru Purnima. So I'll invite my dad and Amy and Goshmaji, all three of you, please come. And please, you come also. Come, please. So it's going to be in Denison? Yes. It's about 45 minutes from Frisco. We have 2 lamps here, we'll be lighting. Come. You can bring it forward like that. Then you have to go in the back and light it. Or come climb up here. Yeah, sure, we can do it in the front. Sure. Right, I'll just bring it here, so we can light it right here, it's easy. We'll bring other lamp also over here. And we'll bring photo of the also there. We'll just put it here.
અગરબત્તીનું પેલું પડ્યું વાંધો નહીં. Please. अभी हमने देखा बेहद खूबसूरत तरीके से ओशो यूनिवर्सल यूएस में ये बेहद खूबसूरत संध्या का आयोजन किया गया और फिलहाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि दीपक प्रज्वलित यहाँ पर किया जा रहा है खेल हम लोग आप लोगों को वही दिखा रहे हैं. I know. Please. Yeah. Let's take it. Yes. Thank you very much. So now we'll do a short meditation. 10 minutes of meditation. I know everybody's hungry. We are running behind the time, but we'll do a quick 10-minute meditation. 5 minutes of we'll do certain sound chanting and 5 minutes of silent relaxing. So everybody can close eyes. Sound O, very fast chanting O, in 3 centers of energy. So primarily, we live in our right born through navel, connected to the mother. Right below navel is a center of procreation and sex. Lot of our energy and nature has provided lot of energy in that center of our energy. So we are going to touch 1 inch below navel and chant Om. Om, 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 fast and fast and fast and fast and fast and fast until I keep chanting and as loudly as possible. Can we dim the lights here? Can we dim the lights? Maybe turn off the chandeliers. Other ones too. Yeah, that's good. Thank you. That is good. That's perfect. So we'll start with chanting Om, 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 and everybody will do it. There's no, you're not following any rhythm. Everybody at their own pace will start. Om, 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 We'll start overlapping the other Om faster and louder, faster and louder. Om, 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 Again, in the same center, we'll start. Om, 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 Om.
Now we'll bring our hand to our middle of the chest, the heart center. Eyes are closed. Touch both of your hands to your heart. And we'll chant Om in. Om, 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 one more time. Om, 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 feeling the joy, the bliss, the love. Yes, yes, yes. Deep in the heart. Love, love, love. That we are made up of. Love, love, love. Now we'll take our hand, middle of the eye, between the forehead.
And we'll just chant Om, 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 Om. Clarity, focus, awareness, to see things as they are. Again. Om, 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 light, golden light, the blue light, smoky blue light, soothing, healing light. One more time. Om, 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 blissful silence. Beyond the pure. Move your head and relax. With a smile. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Relax the body. Relax it. Leave your entire weight on the chair you're sitting. Relax, relax. With a smile, relax. Breathe in and out.
She's our meditation. Thank you very much. Now we'll have dinner and we can turn the lights back on. Yeah. So anybody has any questions or anything, they can ask later after dinner. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। और मैं आखिर में चलने से पहले ये कहना चाहूँगा आपको फिर से बीएसआर मीडिया की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। आज रात को नेपाल में तपोवन में संन्यास होने वाला है और उस संन्यास को हम लाइव दिखाने वाले हैं। हमारे साथ में शाम के समय पर जरूर जुड़िएगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, नमस्कार। हमारे 24 घंटे का लाइव पूरी तरह से पूरा हो चुका है, उसके लिए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के बगैर ये 24 घंटे का प्रोग्राम होना नामुमकिन था। तो चलने से पहले फिर मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार, प्रणाम। टीएनसी का बदलता स्वरूप, टीएनसी बीएसआर का बदलता रंग रूप। टीएनसी बीएसआर अब है बीएसआर मीडिया ग्लोबल चैनल।